stoichiometry is basically the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से उस रिएक्शन की यील्ड फाइंड कर लेते हैं विद रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। या ये भी फाइंड किया जा सकता है कि अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक रिएक्टेंट की अमाउंट की मदद से सेकंड रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड करूँ कि वो कितना यूटिलाइज होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स and products in a balanced chemical equation is called as stoichiometry. Let me take an example of a chemical reaction. Suppose hydrogen, when reacts with oxygen, it forms water. In this equation, 2 moles of hydrogen, they react with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water. This relationship is called as stoichiometry. अगर मैं इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहूँ तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक रिलेशनशिप बन गया from the balanced equation that whenever there are 2 moles of hydrogen, 2 moles of water will be produced. Suppose I have some question. I have only 1 mole of hydrogen that reacts with oxygen in excess. मैंने ऑक्सीजन को एक्सेस में ले लिया, यानी अब ऑक्सीजन का कोई इसमें रोल नहीं है, रिएक्शन में हिस्सा लेगा लेकिन इसकी अमाउंट प्रोडक्ट फाइंड करने में यूज़ नहीं होगी, यानी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेस में है। सो अब अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 mole of hydrogen reacts with excess of oxygen, how many moles of water will be formed? So according to balanced chemical equation, 2 moles of hydrogen produces 2 moles of water. So the 1 mole of hydrogen will produce 1 mole of water. If I will take 3 moles of hydrogen that react with excess of oxygen, you will see the ratio is again 2:2. So 3 moles of hydrogen react with oxygen to form 3 moles of water. Such type of relationship is called as the stoichiometry. Now let me take some more examples. Suppose कीजिएगा मेरे पास मैं ऑक्सीजन और वाटर का रिलेशनशिप जानना चाहता हूँ। According to balanced chemical equation, 1 mole of oxygen produces 2 moles of water. So if I want to say that I have half mole of oxygen that react with excess of hydrogen, so how many moles of water will be produced? So according to balanced chemical equation, 1 mole of oxygen gives 2 moles of water, so half mole of oxygen will give of course 1 mole of water. Similarly, अगर हम कहते हैं कि मेरे पास 2 moles of oxygen है तो देखिएगा 1 mole produces 2, so 2 mole produces 4 moles of water. So such a relationship is called as stoichiometry. So it is basically a quantitative relationship. It means we can find the quantity of the product with the help of the quantity of the reactants by using balanced chemical equation. Now there are some conditions to study stoichiometry. Number 1, all the reactants must be converted into products. Means stoichiometry is only applicable for such reactions that are irreversible. Secondly, no side reaction occurs. It means that when we want to do the calculations, the law of conservation of mass and law of definite proportions must be obeyed. When I say that all the reactants are converted into products, it means the law of conservation of mass is to be obeyed.
क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट की मास को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है एंड द मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. Secondly, when we say the no side reaction occurs, it means the law of definite proportion must be obeyed. Means there is no byproduct formation. The product is only formed over here. So these are three conditions to study the stoichiometry. अब अगर हम stoichiometry को देखें तो इसके लिए हम बहुत से relationships को study कर सकते हैं, जैसे mass relationship. If we are provided with the mass of the reactants and we find the mass of the product, such a relationship is said to be the mass relationship. Similarly, अगर मैं कहूं कि मेरे पास reactant के moles provided हैं और मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हुए प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर लूं, तो दिस रिलेशनशिप इज सेड टू बी द मोल रिलेशनशिप. Likewise, we can have mass mole relationship. Means अगर मेरे पास रिएक्टेंट की मास है या रिएक्टेंट के मोल्स हैं तो मैं फाइंड कर सकता हूं दूसरे के मास या मोल. Such a relationship is said to be the mass mole or mole mass relationship. And likewise, mole volume relationship, that if moles of one of these substance is given, we can find the volume of the other substance. So these are some relationships to study stoichiometry. आज की इस वीडियो में हमने देखा कि स्टोइशियोमेट्री क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है स्टडी करने के लिए, और चंद रिलेशनशिप्स देखे जिनसे हम स्टोइशियोमेट्री को स्टडी कर सकते हैं.